So students, let's continue with our same chapter of geography, that is human resource. We have already discussed the meaning of human resource, density of population, and we have also discussed about the factors affecting distribution of population. Okay, and we also discussed immigrants and immigrants. I hope all the points are clear to you till here. Yes बच्चे, anybody having any doubt? Yes. मैम एक बारी दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. Okay. Clear. So here I am explaining you again immigrants and immigrants. Okay. Yesterday also I told you about both the concept with the help of example. That suppose that you are living in India and you want to go to Australia. Okay. So when people are living their particular country, they are immigrants. Means the people who are leaving a country are immigrants. Now you are arriving in Australia, so population of Australia will increase, and that is because of immigrants. ठीक है, immigrants are the people who are arriving in a particular country. So you are immigrant for India and immigrant for Australia. Both the factors are important factor that how they affect the population of any country. Okay. Clear to you? These are not direct factors, these are other factors, these are included in other factors. ठीक है, जो किसी भी एक कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, वो इमिग्रेंट्स हो गए. और जब आप किसी भी कंट्री में अराइव कर रहे हो, किसी भी कंट्री में पहुंच जाते हो, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूयॉर्क है, अमेरिका है, तो आप उस कंट्री के लिए क्या बन जाते हो? इमिग्रेंट्स. Okay, and the country like the United States of America and Australia have gained in numbers. In numbers में in migration means immigration. Okay, and out migration means emigration. You are going out from India and you are arriving in Australia. So out migration is emigration. In migration is immigration. Now it is clear to you? Yes, Vidhi? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, fine. Thank you so much, बच्चे. Pattern of population change. Population change we have already discussed. Now let's discuss about population composition. बच्चे, composition means elements which are included in anything. That means if we are talking about population composition, so here we are talking about the main elements which are included in the population, like we are having males, females, children. Other than that, if we talk about children, then we can also further divide it between above the age of 10, above the age of 20, like this. On the basis of literacy rate, we can divide it into on the basis of literate and illiterate. Literate, further we can divide it into 10th pass, 12th pass, graduation, post graduation, like this. Illiterate are illiterate only. Okay. But when we divide them on the basis of education level, so we can divide that on the basis of their education. Fine. Next, we can divide them on the basis of income level also, that who are dependent one, who are independent one. Dependent also we are further divided into adult, independent and senior citizens. Okay, so these are the basic composition. Composition means जिस भी चीज़ के mixture से जब कोई भी चीज़ बनती है. So that is population composition. Fine. Getting my point? Yes, बच्चे? Yes ma'am. Okay, fine. Yes. So this is the population composition की किसी भी country की जो एक population का जो composition है, how it is. Males, females are there. Then children are there. Senior citizens are also there. Okay. So देखिए, here is your next topic, that is population pyramid, and it is very important topic बच्चे. ठीक है, for your UT4 also it is very important, because this question can be asked for long answers also. That what do you mean by population pyramid, and you need to show it with the help of diagram also. So population pyramid show you the total population. Fine, and it is also divided into various age, as I already told you about that. When we are divided children on the basis of age group, that above 10, above 20. Okay, and when we find out its percentage, and further we are plotting that percentage on graph.
ठीक है, जब ग्राफ पे आप उस पिरामिड को शो करते हो, पिरामिड मीन्स रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पॉपुलेशन, यू कॉल इट पॉपुलेशन पिरामिड. फाइन. इन दिस यू आर प्रेजेंटिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. किसी भी चीज़ का डाटा है, यू आर कन्वर्टिंग दैट इनटू परसेंटेज. इफ़ यू आर हैविंग एज ऑफ पर्टिकुलर population on the basis of, like, if you talk about children, so you are converting that data in percentage form. If you are having data on the basis of income level, then also you are converting that data into percentage form. Okay, so basically in population pyramid we are converting the data in percentage, then we are plotting it on a graph. So now take out page number 69 of your book. Here, वेट बच्चे, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, एक जो आपका पॉपुलेशन है वो पिरामिड फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, हेयर यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, बॉटम से वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बॉटम इज रिफ्लेक्टिंग द बर्थ रेट. ठीक है, एंड अपर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग द डेथ रेट. इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, सो यू कैन सी देयर, सी बच्चे, हियर, यस, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग परसेंटेज. वी आर डिवाइडिंग एक्स एक्सिस on two parts, one is male, one is female. On the y axis you are having age. ठीक है, तो यहाँ पे when we are dividing into two parts, one is male and one is female, 10 to 0, again 0 to 10. Okay, from the bottom you can see it is broad, means this is showing birth rate. Okay, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, these are age group. Okay, and this is showing the birth rate. And as we go above, we can find out that at the age of 75 plus, death rate is very low. Okay, if the birth rate is increased and the death rate is very low, it means population is at increasing rate. It's increasing at increasing rate because death are very less and birth are very high. So like this, population is increasing. And here if we talk about population pyramid of Kenya, see, here also birth rate is very high. ठीक है, 0 to 4, 5 to 9 अगर आप देखेंगे तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है. उसके ऊपर अगर आप 70 to 74 और 75 प्लस चले जाते हैं तो डेथ रेट यहाँ पे भी क्या है, और भी ज़्यादा कम है. मीन्स केन्या का जो पॉपुलेशन अगर हम देखें तो बर्थ जो है, बर्थ रेट इज़ मोर हाई देन एज कम्पेयर टू द इंडिया. ठीक है, हेयर वी आर हैविंग पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान. सी, बर्थ रेट इतना नहीं है, इट्स लिमिटेड. ठीक है, और डेथ रेट ऑन एन एवरेज है. सो इट्स यहाँ पे जो पॉपुलेशन का कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों का क्या है, डेथ रेट इज़ नॉट वेरी लेस, बट यहाँ पे डेथ रेट अगर लेस है तो बर्थ रेट भी तो आप देखिए ना, बर्थ रेट भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है ना कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसली पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगी. ठीक है, सो दिस इज़ योर पॉपुलेशन पिरामिड and we compare all the populations of Kenya, India and Japan. Fine. And when we talk about the dependent, in the dependent we are having young dependents and elderly dependent. Young dependent means above the age of, below the age of 15. Fine. बच्चा बेसिकली जो 15 ईयर तक का बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है. फाइन, बट जो एक एडल्ट है हु आर एबल टू अर्न इनकम बट स्टिल इफ दे आर डिपेंड ऑन देयर फैमिली, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. कि अगर आप इनकम लेवल पे देखते हैं तो एडल्ट भी कितने हैं जो इनकम अर्न कर सकते हैं बट स्टिल दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. सीनियर सिटीज़न, इफ़ यू टॉक अबाउट द सीनियर सिटीजन्स, तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट जॉब जिनके पास है और या फिर जो द वन हु आर वेरी हेल्दी, दे कैन अर्न फॉर देम, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, दे आर गेटिंग पेंशंस फॉर देम. तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, दैट दे आर इंडिपेंडेंट. बट इफ़ दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इफ़ दे डोंट हैव एनी इनकम सोर्स, सो फाइनली दे आर डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रंस ओनली. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन रीड आउट एनी population pyramid of any country and we can find out the
population of that particular country by comparing the death rate and birth rate. So this was all about your today's chapter. Okay, tomorrow we will discuss its NCERT questions. Thank you so much, बच्चे.